Hello, today we will do a pie chart or a circle graph. Circle graph is not a very famous word. Around the world, this kind of representation is called pie chart. Pie chart is basically showing information inside a circle, and every circle is made up of 360 degrees. So we have to divide 360 degrees between different categories depending on the question. For example, look at this pie chart. 8 hours of sleep, 6 hours of school, 3 hours of play, 3 hours of other, and 4 hours of homework. This is a routine life of a student, time spent by a child during a day. The biggest time is 8 hours. Therefore, when you look at how much area does that have, it's the biggest area. This represents 8 hours. And 3 hours are same thing. Therefore, if you see others का area और play का area same है. Similarly, see here, age of group of people in a town. A town has 100,000 people. 100,000 मतलब 1 lakh. Out of that 100,000, 50,000 is of this age group, 30,000 is of this age group, 20,000 is of this age group. And that information is shown by pie chart. जिसका population ज़्यादा उसको ज़्यादा डिग्री मिलती, जिसका population कम उसको कम एंगल या कम डिग्री मिलती. So let us learn how to draw this kind of pie chart. But before that, some questions which you will write down in your notebook. You don't have to draw these, you just have to write the question answers if asked. Each of the following pie charts give you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each of this information. फ्रैक्शन फाइंड करना है, बहुत ध्यान से देखना, ये तुमको ऑलरेडी आता है. गर्ल्स का फ्रैक्शन ढूंढने के लिए गर्ल्स इज इक्वल टू 50%, बट 50% मतलब 50/100. Therefore, after cancellation, the answer is 1/2. Boys is also 50%, means 50/100. The fraction is 1/2, sum over. Transportation to school, 20% of the population takes the cycle, 40% walks, and 40% takes bus or car. Cycle 20%, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 20/100, 1/5. Walk 40%, 40/100, 2/5. And bus or car again 40%, 2/5. How many loves mathematics? How many hates mathematics? Hate 15%, 15/100, 5 3s are 5 20s are 3/20. A problem with love is there is no percentage given. But remember, we have already done this in a different chapter. 100% is the full thing, जिसमें से 15% hates. So automatically you can find out how many percent loves by subtracting 100 minus 15, 85%. Therefore 85% loves maths. 85/100, 17/20 is the final answer.
Answer the following questions based on the pie chart given in figure 5.6. Question number 1. Which type of programs are viewed the most? द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के प्रोग्राम्स देखे जाते हैं? इंफॉर्मेटिव, न्यूज़, स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट? तुम नंबर देख के गैस कर सकते हो दैट एंटरटेनमेंट इज़ मोस्ट वॉच्ड, या एंगल देख के. सी दिस इज़ द बिगेस्ट एंगल 180 डिग्रीज, बाकी सारे छोटे एंगल्स हैं. देयरफॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ व्यूड. फर्स्ट आंसर एंटरटेनमेंट. Second, which two types of programs have number of viewers equal to those watching sports channel? Which two types? Which two types मतलब question mark plus question mark is equal to which two types of programs have number of viewers equal टू दोज वॉचिंग स्पोर्ट्स. कौन से दो प्रोग्राम स्पोर्ट्स के बराबर है? तो ये रहा इंफॉर्मेटिव 10, न्यूज़ 15. 10 प्लस 15 25%, विच इज़ इक्वल टू स्पोर्ट्स. आंसर इज इंफॉर्मेटिव प्लस न्यूज़ इज इक्वल टू स्पोर्ट्स. सम ओवर. नाउ आई विल शो यू हाउ to do the calculation for a given sum. ये क्वेश्चन है इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है. तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हाउ डू यू स्टार्ट इज बाय ड्रॉइंग अ टेबल जिसका पहला कॉलम यू हैव टू राइट डाउन दिस एंड ड्रॉ योर सेल्फ. फ्लेवर्स चॉकलेट, वेनिला, अदर. So write down the names. Then percentage of students who like chocolate 50%, vanilla 25%, others 25%. Then you have to calculate it to fraction. 50% का fraction is 50 upon 100, 25 upon 100, 25 upon 100. और वो फ्रैक्शन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एंगल यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विथ 360. तुम कैंसिल यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी बात एक ही है. 25 अपॉन 100 इंटू 360, 25 अपॉन 100 इंटू 360, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 degree. That's how you create a table. I hope you have written it. ये रहा डिटेल में. So the first column will be the category, then percentage, then fraction, and fraction multiplied by 360, the result. Now I'll show you how to draw the pie chart of this thing. After your table is ready, you have to draw a circle of 3, 4 or 5 centimeter radius. Any radius you can take. Draw a circle. Then you have to take a scale and from the center draw a straight line with the book. तो याद रखना जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो यू हैव टू कीप द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन वन ऑफ द लाइन्स. बुक की लाइन के ऊपर सेंटर रखना तो ये लाइन ड्रॉ करना इजी हो जाएगा. नाउ यू हैव टू टेक द प्रोट्रैक्टर and keep it. This 0 O has to be kept on the dot. The line has to be matched और 180 डिग्रीज का पॉइंट रखना है.
you have to move this so as to match the line. This is 180 degree, तो यहाँ पे एक मार्किंग होना चाहिए. यहाँ पे remove the protractor, draw the line and write the angle here. 180 degree. What is 180 degree? Chocolate. So you have to write the flavor which people love and how much percentage it is. 50%. अंदर लिखो या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, but chocolate 50% we have successfully drawn 180 degree. अब वेनिला 25% 90 डिग्री के लिए ध्यान से देखना प्रोट्रैक्टर कैसे पकड़ना है. You have to keep the 0 here. बट उल्टा रखना. You always have to move in one direction. This is 180 degree. अब यहाँ से 90 डिग्री मार्क करना है. So this is 90 degree. Remove the protractor. Join the center. This is 90. Remaining 90. This is vanilla. This is others. This is 25%. This is 25%. Your pie chart is ready. Textbook example 1, where you don't have to draw, you just have to answer the questions. What is the information? It is the amount of expenditure, खर्चा, on various items of family during a month. फैमिली किस चीज़ पे खर्चा करती है उसका डिटेल्स है. फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच आइटम एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम. तो ढूंढ लो मैक्सिमम खर्चा फूड पे होता है 25%. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली. सेविंग्स जितना खर्चा किस पे होता है 15% है. एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15%. आंसर इज एजुकेशन. And third question, if the monthly saving of the family is 3000, what's monthly expenditure on clothes? ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है जो हमने चैप्टर आई थिंक 8 में 814 नहीं 2 में देखा. एनीवेज तुमको याद आ जाएगा. मंथली सेविंग्स इज 3000. तो फर्स्ट लुक एट सेविंग्स. सेविंग्स इज 15%. तो 15% सेविंग्स इज इक्वल टू 3000 रुपीज़. तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स कितना है. तो क्लोथ्स 10% है. सो 15% इज 3000, देन 10% इज हाउ मच. क्रॉस मल्टीप्लाई. आंसर इज 2000 rupees. Sum over. So write down the answers of all the questions and move ahead. Example number 2. On a particular day, the sales of different items of a baker. Draw a pie chart. एक बेकर है. बेकर ने ब्रेड बेचा. कितने ब्रेड बेचे? 320. फ्रूट ब्रेड 80. केक्स एंड पेस्ट्रीज 160. बिस्किट 120 एंड अदर्स 40. टोटल 720 सेल किया. नाउ वी डिड वन पाई चार्ट वेयर वी वर कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन. रिमेंबर दिस टेबल. परसेंटेज को अपॉन 100 करो तो फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को इंटू 360 करो तो डिग्री मिल जाती है. यहाँ पे परसेंटेज दिया ही नहीं है. Therefore, the treatment will be slightly different. See what will happen now. First is category, which will be ordinary bread, fruit bread,
cakes and pastries, biscuits and others. The number, the data, the information will be 320, 80, 160, 120, 40. Total is 720. परसेंटेज है ही नहीं, डायरेक्ट फ्रैक्शन कैलकुलेट होंगे. The fractions are going to be calculated something like this. Keep copying in your notebook. 320 upon 720, 80 upon 720, 160 upon 720, 120 upon 720, 40 upon 720. And you have to cancel and find out the basic fraction. 0 0 cut, 8 4 za, 8 9 za. 0 0 cut, 8 1 za, 8 9 za. 0 0 cut, 8 2 za, 8 9 za. 0 0 cut, 4 3 za, 4 18 za, मतलब 3 by 18 मतलब 1 by 6. 0 0 cut, 1 by 18. So 4 by 9, 1 by 9, 2 by 9, 1 by 6 and 1 by 18. These are the fractions. अब फ्रैक्शन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? टेक द फ्रैक्शन, छोटा फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई विथ 360, आंसर 160. टेक द फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई विथ 360, आंसर 40. 2 by 9 into 360, 80. 1 by 6 into 360, 60. And 1 by 18 into 360, 20. This is how you create the table and convert the numbers into degrees. How do you know there is no mistake? To check whether there is any mistake or not, create the total of the degrees. It should always be 360. Yes, it is 360. तो अगर डिग्री का टोटल 360 आता है तो there is no calculation error whatsoever. So I hope you have made this table. Now we will start drawing the pie chart based on this table. Draw a circle of 3 4 5 centimeter, whatever you feel comfortable with. Make sure the center is one of the lines, and to start drawing the pie chart you have to first draw a straight line with a book. Take the protractor, so you have to keep the protractor like this and draw 160 degree. Remember, this is your 0 degree where you start and you have to travel in this direction. This is 160 degree here. So you don't have to write anything, just mark, then remove the protractor and join with a straight line. After joining with a straight line, you have to do this and write 160 degree.
राइट द नेम ऑफ कैटेगरी OB, फुल फॉर्म लिखना. OB मतलब क्या ब्रेड था, ऑर्डिनरी ब्रेड. और ब्रैकेट में उसका नंबर 320. आफ्टर दैट 40 डिग्री fruit bread. Take the protractor, move it, and again arrange in such a way that 0 should coincide with the line. अब ये 0 है, तुम्हें आगे बढ़ना है 40 डिग्री तक. ये रहा 40. So remove the protractor, join it with the 40 degree mark, write 40 and write fruit bread along with the fruit bread number 80. You can write it inside or outside, both is okay. फिर 80 डिग्री के लिए put the protractor again, move in such a way that 0 coincides with this line, and this is 0, you have to go up to 80. This is 80. Remove protractor, join, write the degree 80, write the name of category CP, and write how many 160. Last is 60 degree. 60 डिग्री ड्रॉ करने के बाद जो लास्ट में बचेगा वो अपने आप 20 होगा. So this is 60, this is 20, this is biscuits, this is others. Biscuit is 120 and others is 40. That's how you draw the pie chart. Not difficult at all. Example 2. So you can see here 160, 60, 80, 40, 20, all the calculations. This is how it looks. Let me tell you one important thing. Do you think this looks different? Yes. Why do they look different? It is just because 160 degree has been drawn somewhere else. बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों करेक्ट है. सिर्फ इतना that 160 degree is here, this 160 degree is here. But 160 के एक तरफ 20 है और एक तरफ 40, तो इसमें भी 20, 40. 40 के बाजू में 80, 80, and this is last is 60, this is 60. So it's actually the same, but the orientation is different. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Write down this example from textbook. Production of food grains in every year. So first thing you have to draw a chart, write the years and production, and total is very important. Step 1, converting. Pause the video and copy the question first, and then fraction convert करना है. To convert to fraction you have to do 60 upon 400, 50 upon 400, 70 upon 400, 55 upon 400, 80 upon 400, 85 upon 400. That fraction can be cancelled here, or
you can cancel it later on. I prefer to cancel later on. All you have to do is into 360 to convert it to degree. Keep writing with me. And now comes the time to calculate every degree. First you have to cancel it. 0 0 cut, 4 tens are 4 nines are 4 tens are 40, 4 nines are 36. 0 0 cut, 6 nines are 54. 0 0 cut, 4 tens are 4 nines are 0 0 cut, 5 nines are 45. 0 0 0 0, 4 nines are 36, 7 nines are 63. 0 0, 9 fours are 9 tens are 2 twos are 2 fives are 5 elevens are 11 twos are 22, and so on and so forth. You get these calculations. 22 कैसा है? $55 upon 400 into 360. Okay, you finish the calculation and make a total to check whether there is no calculation mistake. 0 0, 4 tens are 4 nines are 0 0, 8 nines are 72. This is a mistake here. यहाँ पे 9 आएगा, so there will be 55 into 9 upon 10. 5 twos are 5 elevens are 99 upon 2, 49.5. 0 0 0 0, 4 twos are and 36 twos are 72. 54, 45, 63, 49.5, 72 and 72. No, last will be 76.5 क्योंकि वो 85 है, मैंने यहाँ पे 80 ले लिया था. So there is a scope of lot of silly mistakes. Don't do those silly mistakes. और silly mistake catch करने का एक ही तरीका है, total after you calculate all the degrees. और total 360 नहीं आया तो गड़बड़ है. Anyways, this is the correct chart. You can pause the video and see for yourself, after which you have to draw the pie chart. It's not difficult to draw 54 degrees. Let me show you, plain simple. सिर्फ एंगल ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ. You should know the center of the circle and draw one line. This is your starting line.
keep the dot and rotate the protractor and match the line. After matching the line, 54 डिग्री कहाँ पे है? हाँ, this is 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 55 में 55 के एक पहले 54 डिग्री मिल गया, यहाँ पे है 54। उसके बाद 45 चाहिए। So to get 45, you have to rotate the protractor and keep 0 over here. उसके बाद 45, so 10, 20, 30, 40, 45. अगेन प्रोट्रैक्टर को रोटेट करो, ये 0 हो जाएगा और नेक्स्ट एंगल ऐसे ड्रॉ करते जाना है, एंड में सब कुछ ज्वाइन करना है और लेबलिंग, दैट्स ऑल। So this is how you draw the pie chart, and this is how it will look. See how beautiful and neat it is. Compare you have to finish the entire pie chart and then compare approximately the size of each. You have to write the year, you have to write the production, and write the angle in the center of the circle. This is automatically produced from Excel. तो यहाँ पे एंगल लिखने का ऑप्शन नहीं है, बट you have to write down 54, 76.5, 72, 49.5, 63, 45. और तुम्हारा overall sequence should be same, does not matter where you start from. Choice of food for a group of people. North Indian is loved by 30 people, South Indian is liked by 40 people, Chinese by 25 people, and other food by 25 people, total 120 people. Create this table and draw the pie chart. North Indian 30, fraction is 30 divided by 120. हमेशा टोटल से डिवाइड करना है, 40 अपॉन 120, 25 अपॉन 120, 25 अपॉन 120. टू कन्वर्ट टू डिग्री यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 360. तुम पहले भी कैंसिल कर सकते हो, इस बार देखो मैं पहले कैंसिल करके बताता हूँ. 30 120 कैंसिल करो तो 1/4 आता, इंटू 360. ये 1/3 इंटू 360. 5 5 ज़ा 5, 24 ज़ा इंटू 360. 4 360 90 डिग्री, 3 360 120 डिग्री. 12 2 ज़ा 12 30 ज़ा 15 5 ज़ा 45 डिग्री, 45 डिग्री. नो, समथिंग इज रॉन्ग, ये 45 नहीं आएगा. 12 2 ज़ा 12 30 ज़ा 2 15 ज़ा
15 5s are 45 and 1 by 4 1 by 3 5 5s are 5 24s are 12 2s are 12 30s are 15 5s are 75 are. So it's very important to create a total of 360. If you cannot, then something is wrong. Draw the pie chart yourself and compare your table with this table. It should be same and the pie chart should look like this. Labeling should be proper. North Indian 90, South Indian 120, others and Chinese 75 75. तुम्हारा अलग होगा, मैंने जैसे सिखाया वैसे किया होगा तो you will have something like this 90 120 75 75. Both are correct. 90 120 75 75. Both are correct. This you have to solve on your own. Daily income is given and how many workers have this daily income is given. ये नंबर्स को कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना है. दिस इज जस्ट कैटेगरी लाइक चॉकलेट वैनिला एक्सेट्रा. कैलकुलेशन सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ करना है. सो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द टेबल. Pause the video and copy the table with number of workers. Total number of workers is 480. Next, fraction. Fraction के लिए you have to divide every number by 480. Something like this. And fraction to degree, you have to multiply every fraction with 360. Something like this. खुद कैलकुलेट करना, आगे मत देखो तो ही प्रैक्टिस होगी. एंड आफ्टर यू कैलकुलेट ऑल द डिग्रीज एंड क्रिएट अ टोटल 360, वेरीफाई द आंसर फ्रॉम हियर. द कैलकुलेशंस आर टफ बट यू हैव टू लर्न टू डू इट. में कोई बड़ी बात नहीं है, कैंसलेशन करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना. एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द पाई चार्ट विच looks like this. This is one of the most difficult pie charts because there are more number of information. और जो एंगल है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है. Look at this, 33.75 degree, 75 to 100, 33.75 degree, 75 to 100, 45. अच्छा ये है 75 to 100 45. ये जो डिग्री है वो अंदर होती है हिडन. सो दिस इज 33.75 डिग्रीज. वन 150 175, 30 वर्कर्स 22.5 डिग्री. 150 175, 30 workers 22.5 degree. Exercise 5.2. Question answer. A survey was made to find the type of music that certain group of young people liked in a city. Young people में से सेमी क्लासिकल कितनों को पसंद है? 20%, क्लासिकल 10%, फोक सॉन्ग 30% एंड लाइट म्यूजिक 40%. इफ 20 people like classical music, how many young people were surveyed? 20 people like classical music मतलब 20 people एरो 20%. नहीं, सेमी क्लासिकल नहीं, क्लासिकल है ना. 20 people is classical, therefore 20 people is 10%.
तो total how many people were surveyed, total is always 100%. Cross multiply and find the answer. Answer is 200 people were surveyed. Second question, which type of music is likely by maximum number of people? Maximum number of people मतलब 40%. Answer is light music. Light music is liked by maximum number of people. Third, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? टोटल 1000 सीडी बनानी है जो ये परसेंटेज में डिवाइड करनी 1000 सीडी semi classical, you have to copy all this is answer. Semi classical is 20% of 1000, 20 upon 100 of 1000, 200 CDs. Classical 10% of 1000, 10 upon 100 into 1000, 100 CDs. Folk song 30% of 1000, 300 CDs and 40% light है तो 400 CDs. So 400, 300, 200 and 100 total 1000 CDs are produced. Question number 2. 360 people were asked to vote their favorite season. 360 लोगों में से 90 people like summer, 120 people like rainy season, 150 like winter. Total 360. Step 1. Convert the number into fraction. Step 2. Fraction converted to degree. And degree is 90, 120, 150. You know how to draw the pie chart. Draw the pie chart. Name correctly. Check the answer from here. That's all. सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी है जो कंप्यूटराइज्ड पाई चार्ट में नहीं है. डिग्री 90 डिग्री समर, 150 डिग्री विंटर एंड 120 डिग्री रेनी. ध्यान रखना कोई क्वेश्चन आंसर. हाँ क्वेश्चन आंसर है. विच क्वेश्चन नंबर 1, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स. क्या फालतू क्वेश्चन है. कौन सी सीजन को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले. 150 विंटर. फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. ये क्या है. यही तो है. एंड ड्रॉ अ पाई चार्ट. ये रहा. ड्रॉ पाई चार्ट. टेबल शोज कलर प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल. कुछ नहीं है. ब्लू कलर कितनों को पसंद है. 18, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3. टोटल 36 पीपल आर देयर. स्टेप नंबर 1, कॉपी द टेबल and convert them to fraction to degree, and degree is calculated like this, which you have to do it for yourself also. Blue, green, red, yellow. 18, 9, 6, 3. Convert to fraction, then convert to degree. 180, 90, 60, 30. और ये डिग्री लेके पाई चार्ट ड्रॉ करो. ऐसा दिखेगा. There are no question answers, so this is your answer. But I'll tell you, if you have followed my method how I have taught you, तो तुम्हारा पाई चार्ट कुछ ऐसा आएगा. पहले 180 दिखेगा, which is blue.
liked by 18 people. फिर 90 दिखेगा, which is green, liked by 9 people. फिर 60 और लास्ट में 30. 60 is red, liked by 6 people, and yellow is liked by 3 people. So this is how your pie chart would look. It's exactly same as this. सिर्फ घुमा हुआ है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं. ये देखो, BGRY, 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 BGRY. कोई भी एक तरफ सीक्वेंस में होना चाहिए, बट विच डायरेक्शन यू आर टेकिंग, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इज नॉट इम्पॉर्टेंट. Adjoining pie chart gives marks scored in examination by student in Hindi, English, Maths, SS, Science. हर एक के मार्क्स है and total marks 540 है. So grand total of the marks is 540. डिग्री को मार्क्स में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं. पहले सारे कैलकुलेशन करके रख दो. 360 डिग्री टोटल डिग्री होती है, which is equivalent to 540 marks. So 360 is 540, then 90 degree is how much? Cross multiply and calculate. Four za 4 1 za 4, 135 marks. मैथ्स में 135 मार्क्स आए. 65 डिग्री, 360 डिग्री is 540 marks. 65 degree is how much? 65 into 540 upon 360. 0 0 cut. 18 3s are 18 2s are 65 into 3 upon 2. 97.5 marks. Similarly, calculate for 80, 70 and 55 also. When you calculate all, do a grand total. Grand total should be 540 marks. I will calculate the rest. You also calculate it.
82.5 plus 105 plus 135 plus 97.5 plus 120 हो गया ना 540 marks. So whenever there is a big question, you have to first calculate all the marks and then start answering. In which subject did the student score 105 marks? Hindi. 105. How many more marks were obtained by student in maths than Hindi? मैथ्स और हिंदी के कंपैरिजन में मैथ्स में कितने ज़्यादा मिले? मैथ्स में 135 मिले, हिंदी में 105, टोटल 30 मार्क्स ज़्यादा मिले मैथ्स में. Examine whether the sum of the marks obtained in SS and maths is more than science and Hindi. चेक करो SS प्लस मैथ्स साइंस प्लस हिंदी से ज़्यादा है कि नहीं. तो या तो तुम मार्क्स से चेक कर सकते हो या एंगल से, मतलब सेम है. यू हैव टू स्टडी द एंगल्स. SS प्लस मैथ्स मीन्स 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री and science plus Hindi means 80 plus 70 degree. This is 150 degree, 155 degree. So yes, it is correct. SS plus maths is more than science plus Hindi. हॉस्टल में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग, उसका पाई चार्ट बनाना है. द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू. राइट द क्वेश्चन. Find out the total number of students 72. Divide by 72 to create a fraction. Multiply 360. Calculate the degree and draw a pie chart like this. Draw yourself, then compare whether it is right or wrong. Two 60, 45, 35, 20. 260, 45, 35, 20. The angle should be written in the center. The language and number of students outside. That's the end of this chapter. Finish textbook sums and practice book sums. Practice book के सारे sums नहीं करने. I will select the sums and give you, only do that much.